Everything depends on you. What is your perspective? And for me, God is everything, including the one that allows or invites this question even to happen. Intelligence, sentience, everything that manifests, and the source of manifestation, all together, all the beings together. You may say, this is God or consciousness, pure consciousness. If you say, I am God, some people will take offense. How can you say you are God? But if one says, how can anything exist apart from God? Then it's a gentler way into that same truth. The question, who am I, is more intimate than who is God. Of course, it's not the only, there are millions. I've found this the most unsparing question, the most ruthless at exposing the ego as completely a myth. And having exposed it, it's still there and still enjoyed somehow, but from a new place. Because if you ask the question, who is God, and I could give the greatest answer that is going to be satisfying for you, for how long will it be satisfying? I want you to understand this. When you say God, you are not talking about somebody or something. When you say God, you are talking about the source of your own creation. When you say God, you are talking about the source of your creation, from what you have come. What is the source of my being? That's what you're asking. So you're asking me, have you experienced the source of my being or your being? Because it cannot be different. You are asking, have I experienced the source of your existence? So your idea of God is just an exaggerated version of yourself, isn't it? Your idea of God is just an exaggerated version of yourself. See, you are still not able to define yourself. Any kind of definition you put on you, it is not enough to describe this one. When this small piece of creation is like this, the source of creation, how are you going to put a definition on it? You cannot define it, you cannot understand it, you can only dissolve into it. You can experience it, you can never know it, you can't make knowledge out of it. It can only be experienced. You can experience only by dissolving in it. There is no other way. So, we are just looking for methods of dissolution so that we can experience something far bigger than ourselves. See, if you believe there is God, or if you believe there is no God, you're in the same boat. You believe something that you do not know. I believe this, you believe that, doesn't make any difference. You can believe whatever you want. Everybody can believe whatever they want. It need not have anything to do with reality as such. If you say, I do not know, the longing to know will arise within you. If the longing arises, the seeking arises. If the seeking arises, the possibility of knowing exists. अच्छी तरह से याद रखिए कि अगर हमें कहते हैं कि अपने साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का फल है, तब तो आसान है, हम अपनी गलती को ढूंढ लेंगे। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो हम मान लेंगे कि हमें गाड़ी चलाना सीखना है, तो आसान है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं सब चीज प्रभु कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, तो हमारा काम और बढ़ जाता है। पहले भगवान को खोजना, उनसे पकड़ना उनको, फिर उनसे पूछना कि आप इतने एक्सीडेंट क्यों करवाते हैं। इस पृथ्वी पर एक नरक मचा हुआ है, लोग गन से, पिस्टल से, बॉम्ब से एक दूसरे को मार रहे हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है। आपने ऐसा एक चीज बना दिया, वायरस जो दिखाई नहीं पड़ता, खाता रहता है हमेशा, पता नहीं कब वायरल अटैक हो जाए, समझ में नहीं आता। तब उनसे पूछेंगे ना, और बिना भगवान से मिले अगर मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो इसको क्या कहेंगे कि मानसिक रोग हो गया है। अभी मैंने एक उदाहरण अंग्रेजी में बताया था कि अगर स्वामी भावानंद यहाँ नहीं है, आप कोई नहीं है, हम कहें भावानंद आपने अच्छी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया, भावानंद जी हम आपको बुला रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आप आइए क्यों नहीं आ रहे हैं, पीछे क्यों छुप गए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी मेंटल हो गए हैं, हमें मानसिक रोग हो गया है। तो क्या मानसिक रोग में नहीं आएगा कि हम भगवान को खोज नहीं रहे हैं। अगर स्वामी भावानंद से बात करना है तो हम उनको पहले खोजेंगे ना, कहाँ पर है, तब बात करेंगे। नहीं भावानंद है ही नहीं, अरे भाई है वो, भले हमको न दिखाई पड़ते हो, हम कहते ईश्वर है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, नहीं वो हैं, उनको खोजिए और जब मिल जाए तो पूछिए कि नरक क्यों मचा हुआ है। तो कैसे इनको खोजे, क्रिया का ध्यान हम लोगों के पास है। खोजने का सबसे बड़ा साधन है कि क्रिया युक्त ध्यान इतना सीखिए कि लगातार कैसे कर सकें